Hello students, here comes the video on spotting the errors. We would directly be starting from MCQs. If explanation is needed in any, I would do the same along with it. So let's start. The very first one, although he was late, but he stopped on the way to have coffee with his friends. See what we are supposed to do here. I'll just brief you out that we have divided the sentence into few parts. Here we have divided into 4 parts. The first part is numbered accordingly, the second, third and fourth. If you find error in any of it, you have to go for that option. In the option it's written A, B, C, D. अगर सपोज करो आपको सेकेंड पार्ट पे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो सेकेंड इज रिटन इन फ्रंट ऑफ बी, यू विल गो फॉर बी ऑप्शन. जैसे यहाँ पे है, इफ़ यू फील दैट द इंटायर सेंटेंस इज करेक्ट, you would go for no error and you'll opt for D. Okay, here we are not supposed to make the correction. We just have to locate the error. But yes, for your understanding, I would tell you the reason also why we have opted for that particular sentence and why that particular option has been opted by me. So let's start the first one. Although he was late, but he stopped on the way to have the coffee with his friends. Now, if you read the sentence here, first of all, I'll tell you the error is in part second. So we'll go for B option. Now, what is the error? See, the word is although and साथ में use किया हुआ है but. This is an error on the topic conjunction. Conjunction है. Conjunction is what? Conjunction is any word or any set of word which help in joining the sentence. We have 3 types of conjunctions. We have comparative, we have subordinate and we have reflexive. अब ये जो है ये reflexive conjunction है. जब भी although use होता है, although is always followed by yet. ठीक है, although अगर है, although is always followed by yet. So although he was late, yet he stopped on the way to have coffee with his friends. So second part, B is your answer. Second question. She was taking care of her baby for 2 hours before she was called by her mother. No error. Now when I read the sentence, एक कीवर्ड मुझे टेंसेस से ही मिला है, for. The moment it is for, the sentence is either of perfect or perfect continuous. We will see the sentence here. Here they have made the sentence in continuous, that too past continuous. अब past continuous के साथ जैसे ही time mention होता है, that sentence becomes of past perfect continuous. So यहाँ पे was taking नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा had been taking. Okay, it should be had been taking. So जो error है that is in the first part, we'll go for option A. She had been taking care of her baby for 2 hours before she was called by her mother. Third, no sooner did he see his teacher when he stopped copying. No error. Now no sooner is also a reflexive conjunction. ये भी एक conjunction है, ये pair में use होते हैं हमेशा. ओके, conjunction है जो pair में use होते हैं, और जो conjunctions pair में use होते हैं उनको हम reflexive conjunction बोलते हैं. So here it has to be, जब भी आप no sooner use करते हो, it has to be followed by than. अब than जो है वो comparative degree के लिए भी use होता है, but यहाँ पे जब वो नो सूनर के साथ आता है, इट इज़ अ कंजंक्शन, रिफ्लेक्सिव कंजंक्शन पेयर. सो नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, ये व्हेन नहीं आना चाहिए, ये व्हेन की जगह यहाँ पे दैन आना चाहिए. सो नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर दैन ही स्टॉप्ड कॉपिंग. द एरर इज इन पार्ट 2, सो वील गो फॉर ऑप्शन बी. फोर्थ,
हैड यू बीन टू मुंबई आई वुड ऑल्सो गो विथ यू. अब जब मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ आई कैन सी कि ये जो हैड यू बीन है ये पास्ट का सेंटेंस है और उसके साथ आप फ्यूचर लगा रहे हो. मीन्स अगर वो गया होता एक्टिविटी तो खत्म होगी, देन वाई ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर के लिए अगर बात भी कर रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर में वो एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए. बट हियर इट इज़ नॉट सो सिंपल फ्यूचर लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट आएगा. सो व्हेन द मोमेंट इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट व्हाट आर वी सपोज टू यूज? वुड प्लस हैव प्लस V3. सो वुड आएगा, हैव आएगा और V3 में तो आपका गॉन आ जाएगा. So the sentence will turn out to be, had you been to Mumbai, I would have also gone with you. Okay, so the error is in part 2. We'll go for option B. I hope it is clear. Had you been to Mumbai, I would have also gone with you. Fifth, she ran so fastly that she was able to catch the running bus. Now when I read the sentence, यहाँ पे मुझे fastly word है, this is not correct. She ran so fast. Why so fast? See, fast जो है that is an adjective here. ठीक है, adjective use हुआ है, फास्टली नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फास्ट आएगा. सो द सेंटेंस विल बी शी रैन सो फास्ट दैट शी वॉज एबल टू कैच द रनिंग बस. द एरर इज इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस पार्ट में ही एरर है, सो वील गो फॉर ऑप्शन ए. 5A इज द करेक्ट वन. सिक्स्थ, he met me 2 days ago but he never told me about his grandmother's death. Never told me, मैंने आपको बताया हुआ है कि निगेट जब करते हैं सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को जब हम निगेट करते हैं, निगेट मीन्स नेगेटिव करना, नॉट लगाते हैं ना. दिस इज सिंपल पास्ट. सो जब भी सिंपल पास्ट में आप निगेट करोगे आप डिड से करते हो. एंड वेन एवर वी आर यूजिंग डिड यू आर सपोज टू यूज V1 विथ इट. ठीक है, तो इसको आप नेगेटिव जब करोगे इट हैज़ टू बी बट ही डिड नॉट टेल मी. ओके, बट ही डिड नॉट टेल मी. नेवर टोल्ड मी नहीं आएगा, बट ही डिड नॉट टेल मी आएगा. बिकॉज इन सिंपल पास्ट व्हेन वी मेक द सेंटेंस नेगेटिव, जब हम उसको निगेट करते हैं, जब हम उसको नेगेटिव करते हैं, हम उसको डिड से करते हैं और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. सो एरर इज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. सेवेंथ, I would request to you to consider my application for the role of junior engineer. Here would और request इन दोनों में से देखो आप. I request to you आना चाहिए, I would नहीं आएगा. It would be I request to you to consider my application for the role of junior engineer. So पहले ही पार्ट में प्रॉब्लम है. It is 7A. I request to you to consider my application for the role of junior engineer. Would नहीं आएगा request के साथ. 8th, we are looking forward to see you personally. No error. Again problem किस में है यहाँ पे? We are, ठीक है. Looking forward is also fine. To see you personally. No, this is not sounding correct. पर्सनली नहीं आएगा, इन पर्सन आएगा. वाइल स्पीकिंग वी डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स. बोलते हुए हम बहुत सारी गलत इंग्लिश बोलते हैं, बट इफ़ यू राइट, व्हेन यू आर राइटिंग इट हैज़ टू बी, इट इज़ नॉट पर्सनली, इट हैज़ टू बी इन पर्सन. ओके, सो प्रॉब्लम इज इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वील गो फॉर सी ऑप्शन. The correct way of writing is we are looking forward to see you in person and not personally. If we say personally, it is wrong. 9th, companies who are into manufacturing, particularly in the gems and stones business,
would benefit the most from the new scheme. Now see company who are जो यूज़ किया हुआ है, who हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं, who हम हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं. ओके, सो कंपनीज यहाँ पे या तो आप दैट लिख सकते हो, कंपनीज दैट आर, या फिर कंपनीज विच आर, बोथ आर करेक्ट. इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट हु इज़ एंटायरली रॉन्ग. हु इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स. सो प्रॉब्लम इज इन द फर्स्ट पार्ट. वील गो फॉर ए ऑप्शन. Companies that are into manufacturing, particularly in the gems and stones business, would benefit the most from the new scheme. 10th, science is my favorite test subject. Anybody can solve this. ये जो है यहीं पे it is wrong. It has to be favorite only. So problem is in the third part of the sentence. It would be C. Why is it so? सी फेवरेट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया हुआ है. एडजेक्टिव की हमारे पास डिग्रीज होती हैं. वी हैव फर्स्ट डिग्री विच इज़ नोन एज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड डिग्री विच इज़ कंपेरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव. सो फेवरेट इटसेल्फ इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री. आप उसको EST लगा के और ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करोगे. इट हैज़ टू बी ओनली फेवरेट. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फेवरेट इज फेवरेट ओनली. 11th, the bill that I have says the payment can be made until April 30th, 2018. Until, तब तक. until यहाँ पे until नहीं आएगा, यहाँ पे till आएगा. So problem is in third part. C is the correct option. until नहीं आता, यहाँ पे till आएगा, तब तक. जब तक and तब तक का डिफरेंस है इसमें. 12th, I am looking forward for my awaited vacation. Looking forward जब यूज़ होता है इसके साथ हमेशा to आता है, never for. I'm looking forward to your response. So here it has to be I'm looking forward to my long awaited vacation. So problem is in the second part. We'll go for B option. 12B. 13, please send the letter on my business address. ये preposition की error है. On business address के ऊपर भेजना है. No, on is wrong. It has to be to. So we'll go for B option. B part गलत है. Please send the letter to my business address. 14th, Pauline was enough good to lead the group and finish the project. Here the error is in the first part. Enough good. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है? It should not be Pauline was enough good. It should be Pauline was good enough. Why is it so? See, good जो है, good is your adjective. ठीक है, good adjective है. Enough is adverb. So whenever you are using enough as an adverb, वो हमेशा हमेशा adjective के बाद आएगा. Every time. So it has to be Pauline was good enough to lead the group and finish the project. Problem is in the first part. A is the right option. 15th, until he does not owns his mistake, he can't rise. Until he does not. The problem is in the first part. Why is it so? यहाँ पे does not नहीं लगना चाहिए. Read the sentence without does not. Until he owns his mistake, he can't rise. Already the sentence is negative here. यहाँ पे does not आप नहीं लगाओगे. Until itself means एक किसी आप condition को डाल रहे हो. So जब condition डाल रहे हो और यहाँ पे already not लगा हुआ है can't के साथ, so you will not use does not here. Problem is in the first part, and the correct sentence would be until he owns his mistake, he can't rise. 16th,
I asked the breakup of the money charged in the bill. आपने क्या पूछा? आपने जो बिल है उसको ब्रेकअप करने के लिए पूछा. ब्रेकअप पूछा कि किस तरीके से मनी चार्ज की हुई है. सो आई आस्क्ड द के साथ साथ समथिंग इज मिसिंग हियर. इट हैज टू बी आई आस्क्ड फॉर द ब्रेकअप. किसके लिए पूछा? आई आस्क्ड फॉर द ब्रेकअप. सो ए पार्ट इज द part where we need correction. I asked for the breakup of the money charged in the bill. 17th. 17 is a question which we have done already. No sooner had the fighter plane left when we heard the first explosion. As discussed earlier, I'll not get into depth of it. मैंने ये पहले आपको explain कर दिया है that with no sooner we do not use when, we use than. Right? You can refer question number 3 if you need more deeper concept of it. I've already discussed everything in question number 3. So here the problem is in this part. We'll go for option C where 3 goes wrong. So no sooner had the fighter plane left than we heard the first explosion. 18th. इट वॉज हिम. प्रोनाउन का एरर है इसमें. इट वॉज हिम मैंने आगे अभी पढ़ा ही नहीं है. इट वॉज हिम नहीं आएगा, इट वॉज ही आएगा. द हियर द कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हिम नहीं आता है, ही आएगा. इट वॉज ही हु फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज टू गेट ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल. सो ए इज द करेक्ट वन. इट वॉज ही एंड नॉट हिम. 19th. Don't accuse him to the grave crime he has not committed. हम कैसे यूज करते हैं? He is accused for. to नहीं बताते किस चीज के लिए, है ना. के लिए आना चाहिए यहाँ पे. जब के लिए आ रहा है तो वहाँ पे to is wrong. It has to be replaced by for. So ये to की जगह क्या आएगा? for आएगा. So we'll go for the second part. Second part में we are having an error. We'll go for B option. Don't accuse him for the grave crime he has not committed. 20. Many people who are otherwise law-abiding citizens break traffic rules knowingly. law abide citizens कभी भी नहीं होता है. it is law abiding citizens. okay, it is law abiding citizens. vocab की error है इसमें. has to be law abiding. so we'll go for option B where B option says that second part has got something wrong. 21. Phonetics are my favorite subject. एक subject verb agreement का rule है. It says that there are few words which look as if they are plural. कुछ words ऐसे होते हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि plural है, but actually they are singular and we treat those as singular subject. Same goes here. Phonetics जो है ये देखने में आपको s लग रहा है तो इसलिए लग रहा है कि ये plural होगा, but actually it is singular. और इसके साथ हम r नहीं लगाते, इसके साथ हम is लगाते हैं. okay, so 21 B part. Phonetics is my favorite subject and phonetics it is not R. There are many such words. कौन कौन से ऐसे और words हैं phonetics की तरह जिनमें हम error create करते हैं? economics S लगा हुआ है but still you people will take it to be singular. The most common mistake news. चाहे आप एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप 2 न्यूज़, चाहे 10 न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, यू विल ऑलवेज टेक न्यूज़ एज सिंगुलर. व्हाई इज इट सो? न्यूज़ इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म. किसका एब्रीविएटेड फॉर्म है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सो ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होता है. इकोनॉमिक्स, न्यूज़, जिम्नास्टिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे चीज़ों को आप हमेशा सिंगुलर लोगे. 22nd. Air pollution has been studied for years, but has the harmful effects of noise pollution become known? Here the problem is
in the first part, how come यहाँ पे has की जगह have use होगा? See, air pollution is uncountable, but if we talk about effects काउंटेबल है, और क्योंकि ये प्लूरल है, दिस इज प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे और हैज नहीं लगाएंगे. सो एयर पोल्यूशन हैव बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, बट हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन. 23rd, terrorists have no affection with anyone. See, no affection, no love, for होता है, with नहीं होता है ना, with नहीं होता, for होता है. Problem is in the third part, so C is the part which needs correction. Terrorists have no affection for anyone. I don't have any love for you. With you नहीं आता, for you. 24th, the police could prove that the jail inmate died from a overdose. A overdose, yes, problem is here. और प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम इज ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल यहाँ पे अ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एन आना चाहिए था, राइट? सो वील गो फॉर द थर्ड वन विच सेज सी ऑप्शन, एंड सी इज द पार्ट विच नीड्स करेक्शन. 25th, I could not put up at my friend because his house is far away from my office. I could not put up at my friend. At my friend नहीं, friend के साथ. Friend के साथ हमेशा लगता है with. So it would be second one, B option. I could not put up with my friend because his house is far away from my office. 26th, the brethren of this town are always supportive of the measures taken for development of society. Now, has the sentence got no error? No. We'll read it again. What is the meaning of brethren? Brethren is a somewhat plural of brother. Also, it is used for group of companies, group of associations. So, it is what? It is already plural. ये already plural है, इसमें आप s नहीं लगाते हो. Okay, so you will go for the first one. Brethrens नहीं होता, it is brethren. The brethren of this town are always supportive to the measures taken for the development of society. Brethren itself is plural. We will not put s along with it. 27th, the flexible of rubber. आगे पढ़ूंगी नहीं मैं, मुझे यहीं पे प्रॉब्लम I could locate. ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, राइट? बट गेस फॉर योर सेटिस्फैक्शन, इफ यू वांट टू रीड द अदर पार्ट, यू कैन गो फॉर इट. द फ्लेक्सिबल ऑफ रबर मेक्स इट अ परफेक्ट मटीरियल टू बी मोल्डेड into tires. So I'll go for the first one. The first one says, the corrected one would be, the flexibility of rubber makes it a perfect material to be molded into tires. 28, laughing is the best medicine. Here it should not be laughing. ये जो है ये verb नहीं है, ये noun है. When used as a noun it should be laughter, है ना? यहाँ पे laughter होना चाहिए. Laughter is the best medicine, also a famous proverb. So laughter is the best medicine. The first part is the one which needs to be corrected. 29th, teachers and lawmakers are the people who carves the future of the country. अब देखो इसमें एरर क्या है? हियर अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है. whenever we have subject 1 and subject 2, ठीक है, ये subject 1 और subject 2 किससे connected है? and से. तो इसको हम क्या लेते हैं? plural. we take it to be plural. now see the sentence. teachers is subject 1, lawmakers is subject 2. दो सब्जेक्ट्स है, उनके लिए आपने आर लगाया, दैट मीन्स आपने इसको प्लूरल कंसिडर किया. बट देन वाई कार्ब्स, वर्ब में आपने एस क्यों लगाया? विथ प्लूरल वी डू नॉट पुट एस. सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते. सो इट शुड बी ओनली कार्व एंड नॉट कार्व्स. सो प्रॉब्लम इज इन द थर्ड पार्ट. सी इज द करेक्ट वन. टीचर्स एंड लॉ मेकर्स
are the people who carve the future of the country. 30. Investors are averse to putting down the money without legal formalities. See, आप कहीं पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे पैसे लगा रहे हो, सो वहाँ पे पुटिंग डाउन नहीं होता, पुटिंग इन होता है. ओके, सो थर्ड पार्ट नीड्स करेक्शन. C1 इज द बेस्ट वन. इन्वेस्टर्स आर averse to putting in the money without legal formalities. 31. Almost all children like to indulge into ice cream and chocolates. Into क्यों यूज हुआ है? ये preposition की error है. It should not be into, it should be in. Into is for motion, है ना? motion के लिए यूज करते हैं. So fourth part, that is your D option. It should be in and not into. 32. In view of the current market situations and economic conditions, RBI has proposed to withdraw a few product. A few means एक से ज़्यादा की बात करें, ये product नहीं आना चाहिए, यहाँ पे products आना चाहिए. So products it launched for the customers from middle income group. A few, whenever we are talking about, या तो खाली a होता तो आप product लगाते. It is a few, we are talking about more than one, so it should not be product, it should be products. So this part needs correction, and this is your fourth part. So we'll go for the D option. 33. Father is willing to go to the extra mile for the happiness or prosperity. अब happiness और prosperity दोनों में से एक no, यहाँ पे और नहीं आना चाहिए, यहाँ पे and आना चाहिए. So D is the correct one. It should not be happiness or prosperity, it should be happiness or and prosperity. 34. The blind old man was knocked down by a car upon crossing the road. Now see, upon crossing the road नहीं, उस दौरान. So it should be while. So problem is in the C part. ठीक है, while आना चाहिए. While when two activities are simultaneously being performed, वहाँ पे हम while लगाते हैं. So the blind old man was knocked down. Knock ये passive है लेकिन है past continuous, है ना? This part, this is not simple past. इसको आप simple past मत लेना. This is passive in past continuous और ये भी past continuous है, so while ही लगेगा यहाँ पे. Then we have 35th. The angry man walked hurriedly into the crowded room and shouted loud at the guest. Hurriedly use किया as an adjective. Shouted loudly, यहाँ पे loud नहीं आएगा, यहाँ पे loudly आएगा. So it has to be in the C part, third one. The angry man walked hurriedly into the crowded room. Adverb की problem है इसमें, adverb का issue है, so it has to be loudly. यहाँ पे loud नहीं, it will be loudly, not adjective but adverb. 36. I go to the bed. I go to the bed नहीं होता, it is I go to bed. Okay, so 36 problem is in the A part. I did not read the whole sentence. I have located the error in the first part. I go to the bed. No, the is used for particular thing. So I go to bed at 8 every night. It is talking about a routine sentence. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको करेक्शन चाहिए. 37. I shall write to you when I shall reach Bangalore. एक ही सेंटेंस में दो बार फ्यूचर नहीं यूज होता है. ओके, दिस इज अ रूल. जब एक बार शैल हो गया सेकेंड पार्ट में, यू विल नॉट यूज शैल. So drop this word shall and the entire sentence is correct. Problem is in the C part. I shall write to you when I reach Bangalore. 38. I wonder what he has done with the book I lent him. अब इतना तो आपको समझ आ रहा है, ये पास्ट परफेक्ट है. टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट, ये सिंपल पास्ट है. हियर द प्रॉब्लम इज इन द वर्ब, मेन वर्ब. ये V2 फॉर्म होना चाहिए, सो V2 लेंट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी लेंट.
So C part. I wonder what he has done with the book I lent him. L-E-N-T, lent. 39. I was taken with surprise when I saw the glamorous Apu Ghar. I was taken with surprise नहीं आएगा. I was taken by surprise. Surprise से, surprise के साथ नहीं. So it has to be I was taken by surprise when I saw the glamorous Apu Ghar. Last question. Cricket has become so popular that even elderly people are discussing the game when they meet. Now here first part is all correct. ये आर डिस्कसिंग जो है यहाँ पे आर डिस्कसिंग नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्कस आएगा. वाई सो? दे आर टॉकिंग अबाउट रूटीन, हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन हमेशा सिंपल का होता है, सो इट हैज़ टू बी V1. So cricket has become so popular that even elderly people discuss the game when they meet. 40. The problem is in the C part, so we'll go for third one, that is C part. So cricket has become so popular that even elderly people discuss the game when they meet. I hope all the 40 questions are clear. Any doubt in anyone, please post comment. Thank you so much for watching the video.